Dear students, today we will discuss Alamik Bar Open University assignment. Code is 840. Educational Psychology assignment number 2. 840 code assignment number 2. Alamik Bar Open University. Question number 1 is discuss the impact of needs in the development of personality. Personality की development के लिए कौन कौन सी needs होती हैं जिनके impacts discuss करेंगे हम. The 6 human needs are इंसानी 6 ज़रूरतें. Number 1 certainty. Assurance you can avoid pain and gain pleasure. ये सर्टेनिटी होनी चाहिए आपको कि आप पेन को अवॉइड करेंगे और प्लेयर हासिल करेंगे, खुश रहेंगे. नंबर 2 इज़ अनसर्टेनिटी और वैरायटी. द नीड फॉर द अननोन, चेंज, न्यू स्टिमुलाई. नंबर 3 इज़ सिग्निफिकेंस, अहमियत, फीलिंग यूनिक, आप ख़ुद को यूनिक तस्वर करें, इंपॉर्टेंट, स्पेशल और नीडेड. नंबर 4 इज़ कनेक्शन और लव, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ क्लोजनेस और यूनियन विद समवन और समथिंग. क्लोजनेस इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो क्लोजनेस किसी भी रिलेशन के साथ हो या इवन चीज़ों के साथ भी हो सकती है. नंबर 5 इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग. नंबर 6 इज़ कंट्रीब्यूशन, अ सेंस ऑफ सर्विस एंड फोकस ऑन हेल्पिंग, गिविंग एंड सपोर्टिंग अदर्स. Everyone ranks these basic human needs definitely, and the way they are ranked are why you are the way you are as a person. Here's more on the basic human needs and what they mean. ज़्यादातर जो ह्यूमन नीड्स होती हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करती हैं और यही मीनिंगफुल भी होती हैं. नेक्स्ट इज़ सर्टेनिटी, यकीनियत. इफ़ सर्टेनिटी इज़ वन ऑफ योर टॉप बेसिक ह्यूमन नीड्स, अगर सर्टेनिटी आपकी टॉप ह्यूमन नीड्स होगी, यू नीड टू फील सिक्योर, तो आप सिक्योर फील करेंगे एंड सेफ अबाउट द फ्यूचर के हवाले से. विच दैन फुलफिल द बेसिक ह्यूमन नीड फॉर सर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी और वैरायटी, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड द ब्यूटी ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी भी कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग होती है. दोज हु एक्सपीरियंस दिस एज वन ऑफ देयर टॉप बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन टेक इट टू द एक्सट्रीम. वो लोग इसे एक्सट्रीम पर ले जाते हैं, जो कि कुछ लोगों को एडवेंचर करना या अनसर्टेनिटी बहुत पसंद भी होती है. सिग्निफिकेंस, इफ़ सिग्निफिकेंस इज़ अमंग द टॉप 2 ऑफ योर 6 ह्यूमन नीड्स, अगर सिग्निफिकेंस आपकी टॉप 2 ह्यूमन नीड में हो, then part of meeting that need includes receiving recognition. Or recognition is also an extremely important part of keeping up employee productivity. इसका important part है. Next is connection और love की क्या importance है. If connection is your top basic human, you are constantly seeking out a close relationship with someone or something. Next is growth. Those whose foremost need is growth are always striving to be better and learn more. जो लोग ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देते हैं वो लोग ज़्यादा अच्छा सीखते हैं और लाइफ में कुछ अचीव भी करते हैं. नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूशन. द सीक्रेट टू लिविंग इज़ गिविंग. इंसानी ज़िंदगी का उसूल है कुछ देना. एंड दोज हु एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूशन एंड दोज ऑन द टॉपिक बेसिक ह्यूमन नीड्स know the better than anyone. It can help you to embrace the power of growth and create new patterns that lead to the lasting fulfillments. Next is question number 2. Discuss in detail the Thorndike's trial and error theory of learning, or the बार बार ट्रायल एंड एरर, बार बार ट्राई करके क्या सीख सकते हैं. व्यू पॉइंट इन लर्निंग. ऑल्सो डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. जो लोग बार बार कोशिश करते हैं वही परफेक्शन हासिल करते हैं. E.L. Thorndike, an American psychologist, was the propounder of this theory. It is the theory of connectionism. To Thorndike, the basic unit of behavior is SR, connections. Learning is forming of bonds, connections between stimuli and response. Thorndike has highlighted 3 important laws of learning. उसने 3 important laws पेश किए हैं लर्निंग के. लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट. पहले आप तैयार हों, फिर उसको प्रैक्टिस करें और फिर उसके इफेक्ट्स देखें. एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. द लॉ ऑफ readiness has a number of educational implications. Number A, curriculum syllabus are the prepared as per the learner's age, ability or standard.
स्टैंडर्ड क्लासेस के हवाले से, एबिलिटी के हवाले से और फिर बच्चे की एज के हवाले से करिकुलम डेवलप किया जाता है. टीचर इज़ टू मोटिवेट द चाइल्ड बिफोर स्टार्टिंग दिस टीचिंग वर्क. टीचर का काम है सबसे पहले एक बच्चे को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करें. उसके लिए कुछ प्रीवियस नॉलेज भी चेक किया जा सकता है, बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी सुनाई जा सकती हैं ताकि बच्चे फुली प्रिपेयर्ड हों और अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करें. द लॉ ऑफ एक्सरसाइज हैज़ अ नंबर ऑफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. उसमें बहुत सारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासरूम में. Forgetting can be diluted, bad habits can be removed. Law of effects has an important bearing on learning. The learning situation provided by the teacher is enjoyable. Enjoyable हो सकती है इतनी बच्चे अच्छे सीखते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं. It creates school activities create की जा सकती हैं. Each practice will definitely gives result. Next is question number 3. Motivation is an energy change within the person characterized by effective arousal and anticipatory goal reactions. Motivation is the word derived from the word motivate, which means need, desires, wants, or derives within the individuals. It is the process of stimulating people, the action to accomplish the goals. A great teacher recognizes that students' motivation is necessary for the success in learning and that teachers are in the perfect position to improve students' motivation. Here are some strategies that can be used in the classrooms to help motivate students. मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जितना आप किसी को स्टिमुलाई करेंगे, जितना आप किसी को प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर टू लर्न न्यू थिंग्स, इतने ही बच्चे ज़्यादा पिक करेंगे और इसमें इन्वॉल्व होंगे और इतने ही वो उसको थ्रू आउट द देयर लाइफ उस चीज़ को रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्टिंगली किया होगा. तो इस मोटिवेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है और सबसे पहले एक टीचर को स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अच्छा सीख सके और जो कुछ वो पढ़ाता है वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो. नंबर 1, प्रमोट ग्रोथ mindset over fixed mindset. In our book Hindsight, Carol Dweck argues that students have an underlying belief that either a fixed mindset or growth mindset. Students are always willing to work hard for the teachers that is reciprocating that hard work. Number 2 is develop meaningful and respectful relationship with your students. Meaningful और respectful relationship रखें. तभी हर अच्छा टीचर जो कि एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखता है और स्टूडेंट्स को स्पेस देता है, वही बच्चों का आइडियल भी होता है और बच्चे उसको कॉपी भी करते हैं और फिर उसके हर की बात को याद भी रखते हैं. If we are going to truly inspire and motivate all of our students, we should know each of them on the personal level. हमें उनके पर्सनल लेवल पे उनको मोटिवेट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स और शेयर करने चाहिए. In order to begin that knowing, trying, allowing for 5 minutes where students may share good news. This work results in our ability to know our students, which leads to a more cohesive, open learning community. Number 3, grow a community of learners in your classroom. Classroom में एक community बनाएं learners की. Students need a classroom environment that is safe, where they are willing to take risk and struggle. Students should be proudly displayed throughout the classroom. This sends a message to students that they are active participants in greeting the knowledge in the classroom. Number 4, establish high expectations and establish clear goals. जब आप बड़े होंगे तो उनकी ताबीर भी अच्छी होगी. तो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन और इस्टेब्लिश करें, उनके गोल्स क्लियर करें. व्हाट दे वांट रियली, what they have really, what they have the ability to do. Setting high expectations and supporting students as they struggle allows learners to rise to meet those expectations. Working toward daily, weekly, and yearly goals give students a purpose and a meaning for the hard work they do. वो मेहनत किस लिए कर रहे हैं, क्या अचीव करने के लिए. Once the routines to support expectations are established and clear to the learning community, learning becomes the most important action in the classroom. जब students clearly ये सीख लें कि उनमें क्या ability है, वो क्या बेहतर तौर पर perform कर सकते हैं और आगे उनका goal क्या है, क्या achieve करना, तो सब कुछ
डेफिनेटली बेहतर हो जाएगा. बी इंस्पायरेशनल. इंस्पायरेशनल बने. Most adults can recall a specific teacher from the childhood who had a lasting impact. चाइल्डहुड के जो टीचर्स होते हैं उनका स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट बड़ा देर तक रहता है. एंड इट्स राइट. Internationalize our behaviors and strategies as the way to accomplish their own goals. We give them an opportunity to do so, and our everyday routines, assignments, and encounters with them. Next is question number 4. How can intelligence be measured? Discuss some of the good intelligence tests. Intelligence को कैसे measure किया जाता है? जहानत को. और कुछ intelligence measurement test कौन कौन से हैं? Intelligence has been defined in the many ways. Intelligence को बहुत से तरीकों से define किया जाता है. The capacity for logic, understanding, self-awareness, learning, emotional knowledge, reasoning, planning, creativity, critical thinking, and the problem solving. ये सारी चीज़ों को जज किया जाता है intelligence test में. Seven syndrome observed in some individual diagnosed with autism or mental retardation is characterized by exceptional talent in one area of functioning, such as music or math, and poor mental functioning in the all other areas. सेवन सिंड्रोम एक किस्म की ऑटिज़म का शिकार होते हैं जो लोग एक ही चीज़ के गिर्द घूमते हैं. उनमें वो एक चीज़ का टैलेंट तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बाकी एरियाज़ में वो कुछ अच्छे नहीं होते. और ऐसा मोस्टली जो साइंटिस्ट वगैरह हैं ये सारे ऐसे ही होते हैं जो अपनी फील्ड में तो बेइंतहा महारत रखते हैं लेकिन बाकी फील्ड्स ऑफ लाइफ में वो कुछ ख़ास परफॉर्म नहीं करते. जैसे कुछ लोग म्यूज़िक में मास्टर होते हैं लेकिन इसके अलावा उन्हें दुनिया में और कुछ ख़ास अपनी लॉजिक रीजनिंग नहीं होती. कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इसके अलावा साइंस, इंग्लिश या सोशल स्टडीज़ या इन चीज़ों में वो एक्सपर्ट नहीं होते. टाइप्स ऑफ टेस्ट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी गिवन इंडिविजुअली और टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल. द बेस्ट नोन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट आर द Binet-Simon scale, Binet-Simon scale, the Stanford-Binet intelligence scale, and the Wechsler adult intelligence scale. The Binet-Simon scale. Alfred Binet and his colleague Theodore Simon devised this general test of mental ability. The test yielded scores in the terms of mental age. Mental age is the chronological that typically corresponds to a particular level of performance. A 10 years old child whose score indicates a mental age of 12 perform like a 12 years old. एक 10 साल का बच्चा जो कि 12 ईयर के एज के बच्चे का टेस्ट पास कर लिया जाता है तो उसकी मेंटल एज 12 ईयर कंसिडर की जाती है. In 1916, Levi Strauss and his colleagues at Stanford University created the Stanford-Binet intelligence scale by expanding and relieving the Binet-Simon scale. It scores in the term of intelligence quotient. The intelligence quotient IQ is the mental age, और ये बड़ा famous test है, divided by the chronological age and multiplied by 100. IQ scores allow children of different ages to be compared. IQ टेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज को जज किया जा सकता है और मोस्टली ये वही लोग फिर इसमें सरपस करते हैं जो एबिलिटीज़ के हामिल होते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 5. Critically examine the types of psychological testing. Give examples to elaborate your answer. This is the last question. Psychological testing may sound intimidating, but it is designed to help you. Psychologists use tests and other assignments tools to measure and observe a client's behavior to arrive at a diagnosis and guide treatment. Psychologists administer tests and assessment for a wide variety of reasons. Other tests evaluate whether clients are experiencing emotional disorders such as anxiety or depression. उसको चेक किया जा सकता है. Test and assessments are two separate but related components of a psychological evaluation. Psychologists use both types of tools to help them arrive at a diagnostic and treatment plan. Testing involves the use of formal tests such as questionnaires or checklists. These are often described as norm-referenced tests. Norm-reference tests are both developed and evaluated by researchers and proven to be effective for
measuring a particular traits or disorder. Together, testing and assessment allows a psychologist to see the full picture of a person's strengths and limitations. In many cases, psychologists who administer tests will then treat patients with psychotherapies दी जाती हैं. Some psychologists focus only on evaluating patients and then refer them to the other specialist for treatments after they are made a diagnosis. जब तशखीस की जाती है तो अगर वो बेहतर समझे तो आगे रेफर कर देता है. In other cases, the testing and assessments process will help ensure that the client receives treatment that are tailored to his or her individual needs. किसी भी शख्स की इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक उसको फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है. मोस्टली इसमें मेडिकेशन यूज़ होती है लेकिन बहुत कम यूज़ होती है. ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट थेरेपीज़ वगैरह यूज़ करते हैं और जितने फोबियाज़ और इश्यूज़ वगैरह होते हैं उनको इनकी मदद से डिटेक्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और अगर बेहतर समझा जाए तो नेक्स्ट रेफ़र किया जाता है. Thank you so much. Stay connected for more assignments and you may comment for your desired assignments as well. Thank you so much.